Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most gracious, most merciful. I am Iram Tariq, CEO of Millennial Biz Hub and Enrolled Climate Ambassador too. हमारा आज का जो टॉपिक है वेबिनार का वो रिलेट करता है हमारे एक वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम ईटी फॉर वुमेन उससे। ठीक है, सो ईटी फॉर वुमेन जो है वो क्या है? एक्चुअली ईटी फॉर वुमेन है ई ट्रेड फॉर वुमेन। तो अंडर दिस बैनर हम लोग एक कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वुमेन ट्रेडर्स की, वुमेन बिजनेस वुमेन्स की, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की, जो भी खवातीन इस वक्त बिजनेस के साथ मुंसलिक हैं और जो बिजनेस कर रही हैं, और वो खवातीन भी जो कि बिजनेस के बारे में सोच रही हैं कि हम बिजनेस करें, उनके लिए एक स्पेशल आप कहने के सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक बड़ा ही हमने एक बड़ा ही डिफिकल्ट सा टॉपिक जो है वो चूज किया है, और वो टॉपिक है एडवांस इक्विटी फॉर MSMEs इन ट्रेड। ठीक है, यानी कि स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है जो कि बिजनेस कर रही हैं, उनके लिए एक एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना जो कि उनको क्या करे, उनको फ्यूचर में हेल्प करे। तो वो एडवांस सिस्टम ऑफ इक्विटी जो है वो क्या है? आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज इक्विटी। इक्विटी का जो है वो मतलब क्या होता है, ठीक है, ताकि हम ये डिफिकल्ट सा जो है टॉपिक जो है, और इसका जो डिफिकल्ट सा ये जो है हमारा आज का टॉपिक, इसको जो है वो हम क्या कर सकें, इसको हम एक्सप्लेन कर सकें। राइट, सो एडवांस इक्विटी इन ट्रेड हमारे जो है वो आज के इस सेशन में जो हमारा साथ देंगे वो हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो तारिक खलील साहब हैं, जो हमारे सस्टेनेबिलिटी के डायरेक्टर हैं, हमारे जो सस्टेनेबिलिटी जो इनिशिएटिव्स हैं उनको हेड कर रहे हैं। हमारे साथ जो है वो कविता राव है जो हमारी सीनियर कंसल्टेंट हैं और एक्स जो है वो एग्जेक्टिव हैं HSBC की US की, वो उन्होंने हेड किया है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे साथ जो है नुमान है जो कि एक यंग एंटरप्रेन्योर है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में। तो लेट्स स्टार्ट। हम आपको सबसे पहले जो है, जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि ये भारी भारी लफ्ज जो हम सुनते हैं इनका असल में मतलब क्या होता है? व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी क्या मतलब होता है? हमें तो ऐसा लगता है कि इक्विटी का मतलब होता है कोई, जिसे कहना चाहिए हमारे पास कोई कीमती चीज या कोई इस तरह से जो है ना, उसको कहते हैं दिस इज इक्विटी, राइट? बट इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस और जस्टिस, राइट? और ये लफ्ज जो है ये इक्वालिटी के साथ हम समझते हैं। इक्विटी और इक्वालिटी जो है वन एंड द सेम, एक जैसी चीजें हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है, इक्वालिटी मीन्स प्रोवाइडिंग द सेम, यू कैन से सेम टर्म्स एंड सेम, जो यानी कि सारे एक जैसे मौके जो हैं वो लोगों को देना जो है, इट इज कॉल्ड इक्विटी, राइट? And equity, whereas the equity जो है वो क्या है, वो सिर्फ दो टर्म्स, ठीक है, कि आपने क्या करना है, फेयरनेस और जस्टिस जो है वो आपने प्रोवाइड जो है वो करनी है। अब होता ये है कि जब हम इक्विटी से एडवांस इक्विटी की तरफ, ये एक इक्विटी एक जर्नल टर्म, ठीक है, और जब हम एडवांस इक्विटी की तरफ आते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जो कि रेस, सोशल क्लास, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, स्टेटस, इमिग्रेशन स्टेटस वगैरह से क्या हो, बिल्कुल जो है वो ये सब चीजें जो है उस सिस्टम को इफेक्ट ना करें, राइट? जिस तरह से हमारे यहाँ फेयरनेस के और जस्टिस के जो लेवल्स होते हैं, अमेरिका में कोई और कुछ और होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टेंसेस और अकॉर्डिंग टू देयर वो जो भी उनके हालात होते हैं उसके मुताबिक वो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। हम लोग जो होते हैं, हम लोगों के लिए ये नहीं कि हम जस्टिस को तो कहते हैं कि जी जस्टिस हो, फेयरनेस हो, हर मामले में ये चीज हो,
लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने जो रूल्स बनाए हुए हैं या हमने जो पाथवेज बनाए हुए हैं, वो हम लोगों के आपस में जो है वो क्या नहीं करते, टैली नहीं करते। और इसी वजह से क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम अमेरिका में इम्प्लीमेंट होता है, यूरोप में इम्प्लीमेंट होता है, इंडिया में इम्प्लीमेंट होता है, बाकी सारी दुनिया में इम्प्लीमेंट होता है, उसके रिजल्ट्स जो है वो हमें वैसे नहीं मिलते। उसकी रीजन ये है कि हमने अपना सिस्टम वैसे डेवलप नहीं किया हुआ। तो इफ वी वांट टू, अगर हम लोगों को प्रोग्रेस करनी है और अगर हमारी जो माइक्रो मीडियम और जो स्मॉल जो हमारे इंटरप्राइजेस या बिजनेसेस हैं, अगर उन्होंने जो है वो प्रोग्रेस करनी है, तो सबसे पहले हमें जो डायनेमिक्स ऑफ सक्सेस है उनको जो है वो समझना पड़ेगा। और सबसे सबसे पहले जो है हमें भी उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को बनाना पड़ेगा, राइट। तो सो दिस इज कॉल्ड एडवांस इक्विटी। और जो है वो एमएसएमएस क्या है, पहले जो होता था वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होती थी, जिस तरह हमारे यहाँ समीडा है वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को जो है वो क्या करती है, वो उसको जो है ना वो हैंडल करती है और उनको फैसिलिटेट करती है, उनके लिए बहुत सारी वर्किंग जो है वो समीडा जो है। लेकिन अब जो दुनिया में एक नई जिसे कहना चाहिए एक नया एक ग्रुप जो है, दुनिया ने एक नया ग्रुप जो है वर्किंग क्लास जो है, एक बिजनेस क्लास जो है वो इंट्रोड्यूस की है, जिसको वो कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो इंटरप्राइजेस में वो लोग भी शामिल हैं जो कि वन मैन से कहना चाहिए, जो कि सिर्फ फेसबुक पे या इंस्टा पे, या जो सिर्फ एक एक दो तीन लोग हैं जो इकट्ठे होकर कोई एक छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं, उनको भी उन्होंने बिजनेसमैन की कैटेगरी जो है वो डाल दिया। एंड बट दे थिंक बाय डूइंग सो हम लोगों को ये जो एक नई कैटेगरी हमने एमएसएमईज की जो कैटेगरी जो है वो हमने जो बनाई है, वो हमें क्या किस चीज में हेल्प करेगी, वो हमें क्या करेगी, हमारे सस्टेनेबिलिटी के एजेंडा में, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एजेंडा में जो है वो हमें हेल्प आउट करेगी। उसके जो गोल्स है उसको अचीव करने में हमें जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, और जो हमारे जो डिसेंट जॉब, और जो 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 हमारे सस्टेनेबिलिटी की हमने अपने जो 17 गोल्स रखे हैं, हमें ये अचीव करने में जो है वो क्या करेगी, हेल्प आउट करेगी। अब हमारी आज की जो ट्रेनिंग का या आज का जो हमारा सेशन है, इसका जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि हमें कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स के लिए, जो पॉलिसी मेकर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर मेकिंग पॉलिसीज। और पॉलिसीज जब बनती हैं तो उसके अंदर जो आप कहना चाहिए जो की फैक्टर्स होते हैं ना, जो उन पॉलिसीज को इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उनका जानना पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और इसके अलावा जब हमारी जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, हम इसको भी देखेंगे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबल प्रोडक्शन में किस तरह से हेल्प आउट जो है वो हमें करती है। इस तरह से जो आज टॉपिक जो है वो हम जो कवर करेंगे, इसके अंडर वो सर्कुलर इकोनॉमी होगी, कॉर्पोरेट एमिशंस होंगे और टेक्नोलॉजी होगी। सो अब मैं सबसे पहले जो है तारिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि तारिक साहब, आई एम गोइंग टू स्टॉप माय स्क्रीन शेयरिंग। सो हियर आई एम एंड आई एम गोइंग टू स्टॉप इट, राइट। और नाउ आई विल रिक्वेस्ट तारिक साहब कि आप जो है वो कंटिन्यू करें और अपनी स्लाइड्स जो है वो शेयर करें। Thank you, Iram, for introducing. डिस्टर्बेंस जी। थैंक यू इरम फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। और मैं अपना जो है वो डाटा आपसे, जो हमने आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है, वो आपने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। और उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लाइमेट इक्विटी कंसिडरेशन फॉर स्ट्रेंथनिंग एंटरप्रेन्योरशिप्स अमंग एमएसएमईज फॉर अचीविंग सस्टेनेबिलिटी। अब हमें पता है कि बेसिकली यूएन के जो गोल्स हैं वो 3 गोल्स हैं, उनमें से तारिक बेसिकली। साहब अपनी अपनी जो है प्रेजेंटेशन शेयर करें प्लीज। जी प्लीज, मैं कर रहा हूँ।
जी ये कहीं देखिए इरम, आप विजिबल है आप जी स्क्रीन जी शेयर? जी, यस इट्स विजिबल नाउ। इस विजिबल ना हो। इसको स्लाइड शो कर लें। जी जिस तरह मैं डिस्कस कर रहा था कि यूएन के बेसिकली 3 गोल्स हैं, जिसमें टैकलिंग 2 डिग्री सेल्सियस बाय कंडक्टिंग क्लाइमेट वर्कशॉप्स, सेकंड है वुमेन कैन डू, वुमेन ग्रीन इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स भी ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड थर्ड है नेट जीरो इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन। आज का हमारा बेसिकली है, चूंकि हम वुमेन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वी कैन डू वुमेन ग्रीन इकोनॉमिक इनिशिएटिव ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके ऊपर हम आज आप डिस्कस करेंगे। अगर हम अपनी स्ट्रेटजीज की बात करें तो इस सस्टेनेबिलिटी के हवाले से जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं वो ये हैं: क्लाइमेट रेजिलियंस एंड एडाप्टेशन, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड कमिटमेंट कोलैबोरेशन कम्युनिटी इंगेजमेंट्स। तो मैं मेरा मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। अगर आप उसमें देखें तो पूरी जो दुनिया है उसमें बिजनेस के हवाले से या वर्किंग के हवाले से मैन एंड वुमेन कई की वर्किंग है। तो हर लिहाज से जेंडर इम्पैक्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी के जेंडर का, वुमेन का और मैन का दोनों का कितना उसमें रोल है हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने में, या इकोनॉमी की ग्रोथ में, इकोनॉमी की वर्किंग में कितना ज्यादा रोल है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लें कि व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी। लीनियर इकोनॉमी तो एवरीबॉडी नोज, लेकिन व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी? सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली द रीयूज ऑफ प्रोडक्ट्स है, कि जो प्रोडक्ट्स, जो चीजें हमारी पहले हम कंज्यूम करके उनको ऑब्सलीट कर देते थे, अब उनका रीयूज है, वो बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी कहलाता है। उन्हीं से, उसी रीयूज से दोबारा फंड्स जनरेट होते हैं जो कि दोबारा हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट होते हैं। तो इसी वजह से सर्कुलर इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा आजकल इन डिस्कशन है और उसके ऊपर ज्यादा वर्किंग हो रही है। उसकी फर्दर एग्जांपल्स में इंशाल्लाह ताला अगली स्लाइड्स में जाएंगे जब हम, तो मैं आपसे इन डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब सबसे पहले हम आपस में ये डिस्कस कर लें, पूरी दुनिया में जो वर्किंग है उसमें वुमेन का जो रोल है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये जो फर्दर आगे मैं 2-3 स्लाइड्स आपसे डिस्कस करूंगा, उसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर भी वुमेन ने कितना ज्यादा जो है ना वो रोल प्ले किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंट्री की ग्रोथ में, और उनका खुद से कितना ज्यादा रोल है। सबसे पहले हम देखते हैं लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बेसिकली ये एशियन कंट्री है जो कि नेपाल और उसके करीब है एक मुल्क। अगर आप उसमें हम देखें तो ये जो डाटा मैंने आपसे शेयर किया है, ये डाटा मैंने यूएन की साइट से लिया है, तो ये बेसिकली ऑथेंटिक डाटा है। अगर हम देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेट में देखें तो वुमेन टेक 44% शेयर ऑफ टोटल सेल्फ एम्प्लॉयड, वुमेन का 44% रोल था। अगर हम वुमेन एज एम्प्लॉयर में देखें तो 27.7% रोल था वुमेन एज एम्प्लॉयर्स। और इसी तरह बिजनेस रजिस्ट्रेशन में देखें तो वो भी ऑलमोस्ट 46% रोल है बिजनेस रजिस्ट्रेशन, बिजनेस के हवाले से जो रजिस्ट्रेशन की उसमें वुमेन का रोल 46% था। अच्छा ये चंद एक कंट्रीज का है। ये ये डिबेट या ये डिस्कशन सिर्फ इसलिए है हम ये देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और ये देख सकें कि हम फर्दर अपनी इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आ सकते हैं। आगे है, अगला कंट्री है म्यांमार। म्यांमार में इसी तरह डाटा देखा जाए तो 48.5% है एम्प्लॉयड वुमेन एज सेल्फ एम्प्लॉयड, 48.5% वुमेन। इसी तरह 44% जो वुमेन है वो है वुमेन अकाउंट फॉर द ओन अकाउंट, और सेल्फ एम्प्लॉयड या नो एम्प्लॉइज ये है 44.3%। इसी तरह अगर अगर हम आगे फिलीपींस में देखें तो फिलीपींस में भी डाटा इसी तरह ही है कि 33% है सेल्फ एम्प्लॉयड है और 31.9% है उनका जो उन्होंने आगे। मलेशिया का डाटा देखें तो 27.1% वुमेन का शेयर है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड थी। इसी तरह अगर हम इंडोनेशिया में देखें तो वेल
ओवर 1/3 ऑफ एम्प्लॉयड फीमेल इन इंडोनेशिया आर सेल्फ एम्प्लॉयड। कि जितनी वर्किंग लेडीज थी उनमें 1/3 लेडीज जो थी वो सेल्फ एम्प्लॉयड थी, बाकी जो है वो 20% के करीब लेडीज जो हैं वो एम्प्लॉयर्स थी। कैम्बोडिया में अगर देखें तो वुमेन टेक 50% शेयर ऑफ द टोटल सेल्फ एम्प्लॉयड में वुमेन ने 50% रोल लिया है। इसी तरह 61% वुमेन मैनेज द बिजनेस, उसमें 61% वुमेन ने बिजनेस को मैनेज किया। ब्रुनाई दारुल इस्लाम को देखा जाए तो उसमें वुमेन का 43.4% रोल था। अच्छा, अब इस सारी डाटे को जब मैंने कंबाइन किया तो ज़ाहिर डेफिनेटली बीइंग अ पाकिस्तानी मेरे दिल में भी ये क्वेश्चन आया कि मैं अपने मुल्क के हवाले से देखूं कि मेरे मुल्क में क्या है। तो सॉरी टू से मुझे अपने मुल्क का कोई डाटा नहीं मिला, पाकिस्तान का कोई डाटा नहीं मिला। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का ये डाटा या तो इतना कम था कि कहीं किसी जगह रजिस्टर नहीं हो सका, और या हम अपनी वर्किंग को उस तरह रजिस्टर नहीं करवा सकते। ये आज का क्वेश्चन था कि क्यों वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ने वुमेन एंटरप्रेन्योर ने उस तरह अपने आप को डाटा को रजिस्टर नहीं करवाया जिस तरह इंडोनेशिया, ब्रुनाई दारुल इस्लाम, लियाओ कंट्री या इस तरह डिफरेंट कंट्रीज में वुमेन का रजिस्टर करवाया। माइट बी उसमें उन्होंने ऐसे सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स नहीं लेके आ सके या उस तरह था। अच्छा, अब सस्टेनेबिलिटी के हवाले से अगर हम बात करते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योरशिप में सस्टेनेबिलिटी का क्या रोल है, तो सबसे पहले हम टेक्सटाइल सेक्टर में बात। टेक्सटाइल सेक्टर में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लाने के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब रीडिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स है, हम अपने प्रोडक्ट्स को रीडिज़ाइन कर सकें। टेक्सटाइल में हम प्रोडक्ट्स के जो डेवलपिंग है, जो डेवलप है प्रोडक्ट का बनाना है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जहाँ पे उसका प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग से मुराद है डाइंग है, प्रिंटिंग है, जहाँ पे बेसिकली जो है वो स्टीम का यूज होता है, और जहाँ पे बेसिकली एनर्जी का यूज होता है, वहाँ पे भी हम प्रोसेस को शॉर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम एनर्जी की कंजम्पशन को कम से कम कर सकते हैं, और जो बेसिकली आगे जाके हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स को और हमारे कार्बन एमिशन को, जो एफिनेंट एमिशन को कम से कम करेगा, जो कि हमारी इंडस्ट्री को ग्रोथ देगा। तो हम रीडिजाइनिंग ऑफ कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। इसी तरह रेंटल क्लॉथिंग है, इसमें डिफरेंट आगे हैं, अल्टरनेशन एंड रिपेयर्स हैं, प्रोडक्ट्स की रिपेयर की जा सकती है, स्वैप है, आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं, मल्टी ब्रांड फैशन है, रिसाइकलेबल फैब्रिक्स हैं। ऐसे फैब्रिक्स, ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं जो रिसाइकलेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स पे काम किया जा सकता है। ऐसे थ्रेड्स बनाए जा सकते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, जिनकी जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो, जिनकी डिके लाइफ बहुत ज्यादा हो, बहुत देर से जाके उनकी स्ट्रेंथ लूज होती हो, तो ऐसी चीज़ों पे, ऐसे केमिकल्स पे वर्किंग की जा सकती है। तो एनवायरनमेंट में टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा रोल है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सक्सेस स्टोरीज हैं। लाइक अगर आपको एक एग्जांपल दूं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है कार्बन एमिशन को, एनर्जी को, फॉसल फ्यूल को कम से कम यूज किया है, उन्होंने सोलर एनर्जी पे आए हैं। लाइक एक लेटेस्ट एग्जांपल कोहिनूर रावलपिंडी किया है, उन्होंने अपने सारे कंप्लीट प्रोसेस को, उन्होंने डाइंग प्रिंटिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज होती है उसको वो सोलर एनर्जी पे ले गए हैं। तो इसी तरह और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जो केस स्टडीज हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो सस्टेनेबिलिटी में आए और उन्होंने अपने प्रोसेस को शॉर्ट किया और उन्होंने एनर्जी कंजम्पशन कम से कम। इसी तरह हेल्थ सेक्टर है। हेल्थ सेक्टर में डेफिनेटली ये बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें हम सारी चीज़ों को उस तरह डिबेट में डिस्कस नहीं कर सकते। तो मैं डिस्कस कर रहा था कि हम हम बेसिकली जो केमिकल्स या जो दवाइयाँ बेसिकली हम उसके लिए प्रोडक्शन को, फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, उनके समटाइम्स नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारी लाइफ पे आते हैं। तो अगर हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट देखें जो कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर है, तो ये जो ग्लोबली जो 2019 में जो डाटा कलेक्ट किया गया कि AMR काज 1.27 मिलियन डेथ्स जो ग्लोबली पूरी दुनिया में हुई 2019 में। इसी तरह अगर हम देखें इन्फेक्शंस विद बैक्टीरिया रेजिस्टेंस टू लास्ट लाइन एंटीबायोटिक्स काज नियरली 40% ऑफ द हेल्थ बर्डन ऑफ AMR इन द EU, यूरोपीय यूनियन। तो इसी तरह ये फर्दर इसकी डिटेल्स हैं जो कि डाटा मैंने आपसे शेयर किया है कि समटाइम्स जो मेडिसिन यूज की जाती हैं, हम पॉजिटिव किसी काम को समझने के लिए यूज करते हैं, तो समटाइम उनके ड्रॉबैक्स भी आ जाते हैं। इसी तरह आगे हम चलते हैं।
तो इसी तरह पॉजिटिव बेनिफिट्स ऑफ, अगर हम एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन को जो यूज को रिड्यूस करते हैं तो उनके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इन एनिमल्स बाय, जब उनकी जो रेजिस्टेंस बढ़ी, अगर हमने मेडिसिन के रिड्यूस को कम, उसके यूज को कम किया, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो 50% इंक्रीज हो गई, 15% इंक्रीज हो गई। इसी तरह द यूज ऑफ कोलिस्टोन एज ए लास्ट लाइन एंटीबायोटिक इन द यूरोपियन हॉस्पिटल्स इंक्रीज बाय 67%। 2011 और 2020 के दरमियान 67% इंक्रीज हुई। इसी तरह द कोलिस्टोन यूज्ड इन द फूड प्रोडक्शन टू ट्रीट post winning diarrhea in the piglets in 2021. The European food production sector used as a total of 136 tons of cholesterol. तो ये भी उसका बहुत ज्यादा हमारा मेडिसिन का कम इस्तेमाल की जैसे हुआ। अब हम देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में हमारे जो फैक्टर्स हैं उनका क्या क्या है। ये अगर हम देखेंगे, वर्जिंग एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कि दिन ब दिन जिनकी वजह से हो रही हैं, और रिड्यूस, इज इट समटाइम्स यूज्ड और अननेसेसरी, कैन इट बी यूज्ड और रिड्यूस, इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। मिसाल के तौर पर नंबर 1 देखा जाए, 1 बिलियन पाउंड्स ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज्ड ईयरली इन यूएस, 90% फ्रॉम फार्मिंग। फार्मिंग में उसका 1 बिलियन पाउंड्स की पेस्टिसाइड्स यूज की जाती है। अगर आगे देखा जाए तो मेन ग्रीन हाउस गैसेस एमिटेड ड्यूरिंग पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग, जब पेस्टिसाइड्स की मेडिसिन को बनाया, जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग की गई तो उनके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस की इमिटमेंट हुई। इसका मतलब है कि अगर हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम से कम करेंगे तो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पे भी काबू पा लेंगे। इसी तरह आगे चलते हैं, आगे आगे इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से 2 डिग्री टेम्परेचर, फॉरेनहाइट टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। और इसका मतलब है अगेन वही आ गया कि अगर हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम से कम करते हैं तो हम अपने जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है उसको भी कम कर सकते हैं। फर्दर इसी तरह इस स्लाइड के अंदर फर्दर डिस्कशंस हैं कि फॉर एग्जांपल रीडिंग 9 more days per year of high fire risk in the west due to drier forest। फॉरेस्ट बारिशें चूंकि कम हुई उनकी वजह से फॉरेस्ट में ड्राइनेस आ गई, और जब ड्राइनेस आई तो उनकी वजह से आग का रिस्क भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, आग लगने का रिस्क भी बहुत ज्यादा हुआ। आगे देखते हैं हम, 40% डिक्लाइन ऑफ इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग पॉल्यूटेंट्स की वजह से इंसेक्ट्स का 40% डिक्लाइन हुआ, उनका आगे बढ़ना। तो ये है जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे हमारे जो इन चीज़ों के असरात हुए। इसी तरह है कि कुछ चीज़ों का यूज़ हम कम भी कर सकते हैं। अननेसेसरीली बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें उनका अननेसेसरीली यूज़ किया जाता है। तो दिस स्लाइड हम बात कर रहे थे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के, उसको कैसे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को हासिल किया जा सकता है। तो उसमें रीयूज, रिपेयर, रीप्रोसेस के जो मेडिकल डिवाइसेस जिनको कभी पहले जो है वो फेंक दिया जाता था, अब सस्टेनेबल बनाने के लिए अब उन डिवाइसेस को रीप्रोसेस किया जाता है। अब उसकी एग्जांपल बेसिकली अगर हम देखें कि रीयूजेबल medical devices that healthcare providers can reprocess and reuse in multiple patients. Example of reusable medical devices include surgical forceps, endoscopes and stethoscopes. अब इसका अगर प्रोसेस देखा जाए तो ये हमारा जो हमने आपसे ग्रिड शेयर किया हुआ है, जो बेसिकली इसका साइकिल है, वो साइकिल देखा जाए तो क्लीनिंग से, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द क्लीनिंग, और उसके बाद माइक्रो बायोसिक्योरिटी प्रोसेस है, और फिर रिटर्न टू इन्वेंट्री है, और एंड पे दोबारा उसको सॉर्टिंग की जाती है और डिसअसेंबली की जाती है, डिसअसेंबली या सॉर्टिंग की जाती है। तो उसमें से कौन सी चीजें जो है यूज की जा सकती हैं और कौन सी सैम्पल को, प्रोडक्ट्स को या डिवाइसेस को डिसअसेंबल कर दिया जाता है। तो दिस डिपेंड्स कि वो किन किन प्रोडक्ट्स को रीयूज किया जाता है। तो ये भी मेडिकल डिवाइसेस में किया जाता है ताकि और इसकी मदद से हम सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट्स की हासिल कर सकते हैं। नाउ कम्स टू सॉर्टिंग।
अगर हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रिसाइकल बेसिकली भी है कि उसका रिसाइकल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट है कि यूज ऑफ उन उन तमाम प्रोडक्ट्स को, उन तमाम वेस्ट को अलग अलग सेग्रीगेट किया जाए, किन प्रोडक्ट्स को रिसाइकल किया जा सकता है और किन को रिसाइकल नहीं किया जा सकता, उनको लहदा वेस्ट बिन्स में डाला जाए और उसके बाद उनको रिसाइकल किया जाए। तो ये चीज़ हॉस्पिटल में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोसेस को जिन हॉस्पिटल्स में किया जाता है इट्स ओके, लेकिन जिन हॉस्पिटल में नहीं किया जाता इट इज मस्ट बी अडॉप्टेड कि उनको अलग रिसाइकल बिन्स में डाला जाए और वहां से फिर उनको रिसाइकल किया जाए। इन्हीं स्टेप्स की वजह से अपनी एनर्जी को हम कम यूज कर सकते हैं। जब एनर्जी का कम से कम, फॉसिल फ्यूल एनर्जी का इस्तेमाल कम से कम होगा तो फिर हम एमिशन रिडक्शन में भी करेंगे, और एमिशन रिडक्शन का मतलब लो कार्बन इकोनॉमी है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है या कोई बात डिबेट करनी है तो एंड ऑफ दिस सेशन एंड पे हमने एक थोड़ा सा पॉइंट रखेंगे जिसमें डिस्कस किया जा सकेगा। तो फॉर टुडे दिस इज फ्रॉम मी, दिस इज ओके। थैंक यू इरम। जी, थैंक यू तारिक साहब। आपने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी और डेफिनेटली आपने बहुत ज्यादा जो है ना वो एक पोर्शन जो है वो बहुत ह्यूज, दो सेक्टर्स को जो है वो आपने बड़ा थोड़े से टाइम में जितना भी पॉसिबल हो सका आपने हमें गाइडलाइंस दे दी कि किस तरह से हम जो है अपने ये जो दोनों सेक्टर्स हैं इनकी सर्कुलरिटी और सर्कुलर इकोनॉमी को कंसिडर करते हुए हम किस तरह से जो इमिशंस जो है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ इट्स अप टू कविता के कविता जो है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस रिडक्शन के बारे में जो है वो अपना बताएंगी कि किस तरह से ये जो GH ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो किस तरह से हमारी जो है वो एटमॉस्फेयर को जो है वो इम्पैक्ट भी करती है और इसका कंट्रोल जो है वो क्यों जरूरी है और हम अपनी इकोनॉमी को ग्रीन करने के लिए why it is so important. Now it's over to Kavita. Now it's the big question. Thank you. Okay, how we can tackle corporate emissions or corporate, what is the concept of corporate emissions? Correct, absolutely. So thank you so much, and thank you, Tariq sir, for the wonderful presentation. Thank you, Iram. So today's topic, as everyone has been discussing, is what we can do as women. So Women Green Economic Initiative, and we're going to be talking about via digital transformation to the green economy. So corporates in small, and of course, in short. And of course, we are focusing on the women economic empowerment. Now, how do we look at it? We're going to look at it through climate resilience and adaptation. What are the changes we need to adapt to in order to save our planet? So this is a beautiful picture, and I've kept it simply for the reason because this is what we're going to look forward to, a green economy, right? So you can see, you can see green everywhere. What else can we notice in this screen, which is making the whole world green? Can I get one or two things from everybody? Yes, it's the sun. Yeah, okay, the sun is there. The sun is always there. But what's making everything green? Clean air, clean waters. Clean air, right? You don't see pollution. Clean waters, we're hoping. Little things like you can see the car going with the battery, right? It's running on battery, not on gas. People are cycling. People are Why walking. everybody is missing dollar sign? Everybody's missing dollar sign. Okay, so people are walking. Well, yes, they're not worried about that. They're working. They're walking to work. They're not enjoying themselves, but it's healthy air. So they're healthy in their
life in their livelihood. Now, one thing that you can notice in the buildings, what do you notice on the top of the buildings? Solar energy panels. Solar energy panels, yes. And this is the best way to get renewable energy because the sun is there. In Asia, we've all got sun. So the solar renewable panels use that sun, as you're aware, and give us the most, cheapest way of electricity. And then, of course, you can see factories which are not letting out exhaust and fumes. As you can see, it's a green leaf. So it is more, they have looked at their global greenhouse gases. And that's what we're going to talk about today. They have looked at their greenhouse gases and looked at how they can convert it. Now, let's look at a couple of things on how we can move towards green economy. What Tariq sir also mentioned was the low carbon economy, right? How do we get low carbon? The main cause for carbon is the greenhouse gases. Now, how do we reduce greenhouse gases? Before that, let's look at understanding what are greenhouse gases. Now, this picture, I'm sure all of you would have seen it, something similar. So this is the sun, which is shining down on Earth. It has been happening for many millions of years. The Earth gets heated up, but by night, it cools down through radiation. Now, what's happening with man, with human beings coming into the planet? We are starting to use our different kinds of appliances, correct? So, as usual, Earth warmed by sunlight causes the surface to radiate heat. But because we as humans have started having factories which give out smoke, which results in carbon dioxide, we've got our farming, we've got our agriculture, we've got the cows that we rear or the animals that we rear in the farms, which give out methane. We've got cars, vehicles on the road, which give out exhaust, which is nitrous oxide. And then you have our aerosols, you have refrigerators, which give out chlorofluorocarbons, which is again some more carbons in the air, and haloalkaline. Now, what happens? All of these are known as greenhouse gases. These go up. So these are greenhouse gases. These are the gases that escape because of what we have created, go up into the atmosphere and form another layer around the Earth. They are produced by man, and they are different from other gases because they absorb the radiation released by Earth and do not allow the radiation to escape into the atmosphere. As a result, the Earth gets heated up. Now, if there were no greenhouse gases, if we did not have our factories, we did not have our, agriculture, we did not have cars, so many cars on the road, we were not using refrigerators and aerosols, then our Earth's temperature would have been, average would have been minus 18 degrees. But today, it is almost averaging to 30 degrees. And in Asia, we go up to 40 degrees, which is a scary picture. And this is what would happen if we didn't do anything about our greenhouse gases. We would reach a temperature of 5.5 degrees Celsius, higher than what we are today. All the reds you see is what happens when the Earth gets heated up. This is a depiction of how the Earth will look in 2050 if we don't do anything. Now, this is what is happening today, right? The solar caps are melting because the average temperature of the Earth is increasing because of the greenhouse gases escaping. The solar caps are melting, sea level is rising, there are floods everywhere, there is fires, as you can see, there is no water in some places, there is, so there's drought in some places, and there is bad air everywhere, right? We all have health problems. So the true cost, so WHO says the true cost of climate change is felt where? Is felt in the hospitals and in our lungs. Now, besides that, this high temperatures of the Earth, we have effectively wiped out 60% of mammals, birds, fishes, and reptiles since 1970. You can see these animals here, these are all the endangered species. They've either been wiped out completely, they've become extinct,
or on their way to become extinct. It's a scary thought. Now, let's look at corporate emissions. What is the corporate carbon footprint? Now, what are we talking about here? In this, you can see that emissions are created by companies. We had just seen in the previous picture how factories create emissions, correct? But carbon footprints are generated by who? By you, by us, by your marketing efforts. Because digital technologies make up nearly 4% of greenhouse gas emissions. So, what can we do to ensure that we leave behind a carbon footprint? As Tariq sir was also mentioning, recycling your waste, right? Ensuring you don't use gas, petrol to such extents. Convert your cars, your vehicles on the road, make them electric. Electricity should be renewable through wind, solar, and control our greenhouse gases, the emissions. And that's how we can ensure that we have a planet for our children. Okay, so I have a few case studies. So Tata Steel, it's Asia's largest private sector steel company. You might have heard about that. Now, all companies, people, everybody's getting aware of these GHGs. So they're reducing their greenhouse gas emissions through energy efficiency. So each year, the company launches several green efficiency projects, which introduce less greenhouse gas intensive processes. And they're also actively pursuing GHG trading markets, which means these markets help them improve their greenhouse gas performance. One case study. Second one, Volkswagen. It's the car company, right? It's a global auto manufacturer. So emissions from their production process, which was considered to be irrelevant in 1996. 1996, nobody Hello. There's lot and lot of, I don't know, there's lot and lot of. Hello. Yes. Sorry. Yeah. There's. Shall I continue? Sorry that I don't know what happened. It just got kicked out of that. So shall I share my slides again, or Yes, do we have time, Iram? Yes, Okay. yes, we have. Okay. No, okay, so let me quickly go through it. Yeah. So, okay, I was talking about Volkswagen, which was, being aware today because they are emitting almost 20% of GHG emissions at their plant sites. So basically, this shows that we have to regularly reassess and complete an inventory about how much greenhouse gases we are sharing. Now, IBM also has reduced its greenhouse gas emissions. Right now in Texas, they have got a contract for renewable electricity.
From 2001, they have a 5-year contract for 5.25 million kilowatts of wind power. So this zero emission reduces almost 4,100 tons of carbon dioxide. Each company is doing their bit, right? Now, Body Shop, a lot of women would have heard of it. This is a retailer, skin, hair, body care, makeup. Body Shop is also aware. So with the help of climate change program, they have approached the problem of greenhouse gases, the 2-tier solution. Stores are encouraged to actively pursue direct consumption. Second, if you're unable to obtain direct consumption, they were given standardized guidelines for estimating emissions. So Body Shop is doing something. We've got Shell, we've got IKEA. You know, the interesting thing about IKEA, I think everybody knows IKEA. Have you noticed that IKEA is, in every country, it is situated near a public transport? Because they have done a study where they looked at how much customers spend when they go to IKEA. Not every day, when they travel, how many people come in their cars, how many cars on the road, etc. So instead of that, they're encouraging their customers to use public transport. Their stores are next to a public transport. And they have also started home delivery so that so customers don't spend. You know, how many more customers come to the shop? So they're controlling their greenhouse gases through this. Now, what can you do? You can empower yourselves with new innovations and solutions. You are a carbon offset contributor, but now we would like you to become a carbon impact partner. So there are a couple of steps here, which all the companies have adopted, individuals have adopted, which you can do too. Managing, so especially entrepreneurial women, right? What you can do is managing greenhouse gas risks, identifying reduction opportunities. You can publicly report and participate in voluntary GHG programs. You can participate in mandatory reporting programs. So constantly report what is your greenhouse gas usage of companies. You can participate in greenhouse gas markets. There are trading programs, as I was speaking to you about earlier. You can also provide information to support baseline protection of companies and greenhouse gas inventories. Now, what we can do is so if you let us know which companies you're working with and what your next steps are, we can train and educate people and organizations. We can use we've got a very fantastic tool, which is called the En-ROAD Simulator. We can use that and we can help train your people. And with that, I come to an end of my session. Any questions so far? Thank you, Kavita. We will definitely repeat this session once again with different topic, because today there is a lot of, disturbance. So that's why maza nahi aa raha. But anyways, चीजें कन्वे होती जा रही है. Now our next जो हमारे speaker है वो Noman, and he will tell you how digitalization, innovation and technology can help us in reshaping our economy to green economy, or our women entrepreneur to eco entrepreneur. And then jaldi मैं फिर I will इसको ना wind up जो है वो करूँगी, right? So Noman, please. Hello. Ji, Assalamu alaikum, everyone. Welcome. So I'll just quickly jump to my presentation. Yeah. I'm going to let me share my screen first. So, all right. So people, can you see my screen? Yes, it's visible. Okay, great. So I'm going to talk about ICT and sustainability. Since sab log Pakistan se hai, I believe if anybody doesn't understand Urdu, so I can switch to English. Okay, so With Urdu because we want to convey this to our Urdu entrepreneurs. We मतलब अपनी खवातीन के लिए especially जो है जो उनको आसान बात समझ आए. अभी क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है सस्टेनेबिलिटी के बारे में, तो मैं इसको कनेक्ट करूँगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ.
सो मैं क्या करूँगा कि मैं मैप करूँगा जो हमारे सस्टेनेबिलिटी की चैलेंजेस हैं उनको आईसीटी के साथ. सो I will try to quickly do it. So spread of ICTs or global interconnectedness. ICT ने actually it's a support pillar. ठीक है, टेक्नोलॉजी जितने भी बहुत सारे हम देखते हैं काम हो रहे हैं. सो सबके पीछे कुछ ना कुछ तरीके से आईटी सपोर्ट कर रहा होता है. जिस तरह हमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प हो गई है, इन ड्राइव है, उबर है. सो हमें गाड़ियाँ टैक्सी तो मिल रही हैं. सो हम बस इग्नोर एक फैक्ट कर देते हैं कि हम एक ऐप के थ्रू काम कर रहे हैं. ठीक है, ऐप कोई बहुत बड़ा हवा नहीं होता कि बहुत बड़ी कोई बला चीज़ है और टेक्निकल हो गया है, ये हमें समझ नहीं आ रहा. इट्स ऑल अबाउट कि हम टेक्नोलॉजी को अपने इर्द गिर्द माहौल में कैसे लेकर आ रहे हैं ताकि लोगों की लाइफ ईजियर हो. ठीक है. सो आईसीटी टेक्नोलॉजी क्या है कि इसकी तीन तीन पिलर्स पे है. एक तो ये कि एनवायरनमेंट बेस्ड सस्टेनेबल होनी चाहिए. इससे ऑब्वियसली जैसे सब लोगों ने बात की है, डिस्टिंग्विश जो स्पीकर्स हैं, कि एनवायरनमेंट को हमने साथ लेके चलना है. रदर देन के जैसे आईबीएम की बात की उन्होंने कि आईबीएम इज गेनिंग गुड मोमेंटम. सो टेक्नोलॉजी ने ये नहीं करना कि वो मजीद प्रॉब्लम खड़े कर दे. ठीक है, मजीद कार्बन फुटप्रिंट आ जाए. सो एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी शुड हेल्प इन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट. प्लस सोशल इंक्लूजन कि हमारे पास जो रिमोट लोग हैं, पॉवर्टी से बिलो हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, फीमेल हैं. सो इंक्लूड एवरीवन, यंग किड्स, ओल्डर. सो टेक्नोलॉजी शुड you know uh, encompass everyone. Just give me a minute. Okay. Uh, all right. So, okay. Uh, so, okay. Next is के आईटी के रोल कैसे प्ले कर रहे हैं. इंटरनेशनल कोऑपरेशन हमारे हो रही है, कोऑर्डिनेशन हो रही है. हम यूएस में काम करके दे रहे हैं, यूएस से टेक्नोलॉजी इधर आ रही है. सो इज सेम फॉर ऑल अदर कंट्रीज अक्रॉस. सो व्हाट वी आर डूइंग इज एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए भी इवन हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट भी कर रहे हैं और लोगों को चीज़ें बना के भी दे रहे हैं. सो इट्स अ कोलैबोरेशन काइंड ऑफ अक्रॉस द ग्लोब. ठीक है, इसके अलावा हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं. कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जिस तरह का हमारे सेशन है, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हम लोगों को अवेयरनेस दें हाउ आईटी कैन एनेबल सस्टेनेबिलिटी एंड ब्रिंग इट फर्दर. इसके अलावा पार्टनरशिप्स हैं. हमें बहुत सारी पार्टनरशिप्स करनी पड़ती हैं. जैसे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट है. ठीक है, सो टेक्नोलॉजी आईटी के लोग लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं कि किस तरह से हम इसको मज़ीद रोबॉस कर सकते हैं. ज़्यादातर मैं एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि हम लोगों ने एक यूएस में क्लाइंट के लिए एक ऐप बनाई हुई है, पिक योर ट्रैश. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज के लोग जो हैं जब उनका ट्रैश ज़्यादा हो जाता है, सो व्हाट दे डू इज कि वो सेम ट्रैश कंपनी को एक एडिशनल रिक्वेस्ट भेजते हैं ऐप से. दे कम एंड पिक इट अप ऑन डिमांड. राइट. वैसे तो होता है ना कि हमारे लोग आते हैं वो लाहौर वेस्ट के, और वो आते हैं दिन में एक दफ़ा ले जाते हैं. बट अगेन जब कोई आपका कोई इवेंट है घर में या आगे पीछे, और ट्रैश वो ज़्यादा हो गया है और वो पड़ा हुआ है और वो कल तक वेट करना पड़ेगा उसका, तो यू जस्ट टैप ऑन दी ऐप और आप उनको बुलाएं और वो आपका पिक करके चले जाएंगे विद माइनर, वेरी माइनर फी. सो आई थिंक this is how technology is going to evolve and bring about greenery, reduce the garbage trash. ठीक है, अपने नेबरहुड्स को हम क्लीन रख सकते हैं इस तरह से. सो और इस तरह से एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आजकल जिसमें काफ़ी काम हो रहा है, इट्स अबाउट कि हम लोग डेटा इकट्ठा करें ऑल राउंड अस कि हम क्या चीज़ें कितनी कंज्यूम कर रहे हैं. कितनी पानी की प्लास्टिक की बोतल्स हमने पी ली हैं, स्प्राइट की बोतल्स जो हमारी पी ली है और वो फेंक दी हमने, वो कितनी चली गई है आपके इन्वायरमेंट में, कितना ज़्यादा वो ट्रैश चला गया है. आपने कितने गत्ते के डब्बे इस्तेमाल कर लिए हैं. ठीक है, सो ये कंज्यूमर स्पेंड और आईटी के थ्रू उस डेटा को कलेक्ट करके हमारे पास बहुत सारा डेटा आ सकता है एक विजुअल फॉर्म में, कि हम देख सकते हैं कि क्या चीज़ कितनी यूज़ हुई है
और उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक शीशे की बोतल आप वो रिसाइकल हो जाती है, प्लास्टिक इतनी आसानी से नहीं होता। सो व्हाट आर द वेज के क्या चीज़ जल्दी रिसाइकल हो सकती है, ठीक है। अभी मैं कुछ यूएन के गोल्स पे बात करूंगा। 17 गोल्स हैं। मैं 17 को सारों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट क्विकली, ठीक है। मैं इनको वैसे इधर से विजुअल फॉर्म में ले आता हूँ। पॉवर्टी एक एंड करने, पॉवर्टी क्रॉस है, एक मेजर गोल होता है, द नंबर वन प्रायोरिटी इज पॉवर्टी, ठीक है। अभी ये देखें कि किसी ने एक वेबसाइट बनाई हुई है विद इन अफ्रीका, और व्हाट दे डू इज एग्री फूड के लिए उन्होंने एक वेबसाइट और अवेयरनेस बनाई है फार्मर्स के लिए, उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, और उनके कोई प्रोजेक्ट्स हैं वो देते हैं। किसी ने जो भी जैसे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे बहुत सारे उन्होंने फार्मिंग के ऑप्शंस दी हुई है कि कौन सी वाली चीज़ आप कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है। सो आप फार्मर्स को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, राइट। और इस तरह से बजाय कि कोई एक चीज़ जो अब हमें पता चल रहा होता है कि क्या चीज़ काम है, जैसे हम इंपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो हम फार्मर्स को एजुकेट करें कि वो कैसे वो हम पाकिस्तान में लगा सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से यू बिल्ड इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स फॉर योर फार्मर्स के जिसके थ्रू उनको अवेयरनेस जाए कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ठीक है। आप हंगर की बात करें, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, तो ये गोल 2 है यूएन का। तो ये दिस लेडी इन माली, व्हाट शी डूइंग इज उन्होंने फार्मिंग भी करी है, साथ उन्होंने सेंसर्स लगाए हैं, डेटा कलेक्शन करी है, ठीक है। उन्होंने अपने जो क्रॉप्स हैं उसमें सेंसर्स लगाए हुए हैं, और लाइक ए सेट की डेटा कलेक्शन हो रही है कि वो कैसे उसको बेहतर उसको फार्मिंग कर सकती हैं, पानी की कैसे बेटर मैनेजमेंट हो सकती है। जी आप तो देख रहे हैं कि ये राइट साइड पे सारा उन्होंने वो बताया है कि हाउ शी इज इम्प्रूविंग हर फार्मिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है। नंबर 3 गोल है हमारा हेल्दी लाइफ्स, ठीक है। हम वेलबींग को कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो इसमें uh, ये दिस गाय इन सेनेगल, और ये इन्होंने मोबाइल ऐप के थ्रू ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि हाउ यू कैन हैव अ बेटर न्यूट्रिशन एंड कैसे आप बेहतर अपनी लाइफस्टाइल इन फूड लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ अ मोबाइल, ठीक है। गोल 4 इज इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन, लाइक ए सेट के सब लोगों को हो एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। अब सब लोगों को एजुकेशन लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमारे पास सब डिवाइसेस हैं, यू कैन पुट स्क्रीन इन रिमोट स्कूल्स, जहाँ पे आपके बड़े स्कूल्स के जो लाहौर और बड़े सिटीज़ में टीचर्स हैं वो रिमोट एरियाज में डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू उन बच्चों को एजुकेट कर सकें, ताकि सब लोगों को वही स्टैंडर्ड एजुकेशन मिल सके, राइट। सो व्हाट विल हैपन इज कि आपके रिमोट एरियाज में एजुकेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपके वो एरियाज ग्रूम करेंगे, और दे विल गो टुवर्ड्स अ बेटर मेक अ इम्पैक्ट इन इकोनॉमी, ठीक है। इंक्लूसिविटी है, जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरमेंट, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज वुमेन की स्किल्स पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारा काम हो रहा है वुमेन एम्पावरमेंट में, और जस्ट अच्छा, थैंक यू नुमान। आपने हमें बड़ा अच्छा जो है वो गाइड किया कि हाउ टेक्नोलॉजी इज रीशेपिंग द प्रेजेंट entrepreneurial setup into digital entrepreneurs, right? जी बिल्कुल। तो इसमें मैं आपको क्विकली, अगर मैं बस अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आपको पिक्चर्स में दिखा देता हूँ कि लाइक सोलर की बात हुई है, सोलर इज अ टेक्नोलॉजी, ठीक है। यू प्लेस इट, ठीक है। उसके बाद आप अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में आप आईटी को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, ठीक है। बेटर वे ऑफ यूजिंग, ठीक है। जैसे हम गाड़ी चलाने का भी तरीका होता है, ठीक है। अब जैसे हम फ्यूल इमिशंस हैं, वो कई दफ़ा ज़्यादा इसलिए होती हैं कि हम सही तरह गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं रखते, राइट। सो इट्स गुड वे टू डू इट, ठीक है। विजुअल डिसेबिलिटीज़ के अंदर आप आईटी को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पार्किंग का बड़ा इशू है, यू कैन ब्रिंग इन दी स्मार्ट मीटर्स एंड
पार्किंग, हमने एक ऐप भी बनाई हुई है, पार्किंग ऐप। सो वो हमने कतर में क्लाइंट को दी है टू बेटर मैनेज द वैले एंड द पार्किंग स्पेसेस। ठीक है, सो ये और इसके अलावा क्लाइमेट की बेस्ड आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पता चल जाए कि वेदर की क्या कंडीशन होने वाली हैं। ठीक है, सो देयर लॉट ऑफ आइडियाज जिनकी बेस पे बहुत सारी कंट्रीज भी काम कर रही हैं टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ पीपल ऑन बोर्ड। ठीक है, जिनेवा में भी एक वेबसाइट है वो, जिसके थ्रू आपको पता चल रहा है कि जो कौन से इवेंट्स हो रहे हैं जिन पे आप यू कैन गेट अवेयरनेस। ठीक है, सो इन अ नटशेल आई एम जस्ट गोना क्लोज के देखिए हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है। सो विमेन और मैन if I emphasize on women, तो women should look at their environment और चैलेंजेस देखें अपने एनवायरनमेंट में क्या हैं। वो सस्टेनेबल है, पॉवर्टी रिडक्शन है, एजुकेशन है, जॉब्स क्रिएशन है। सो हाउ कैन यू डू दैट? सो लर्न सम स्किल्स और उन स्किल्स को बेटर वे में यूज सम टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्किल्स भी सीखें और टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा साथ साथ सीखें ताकि आप ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। ठीक है, अगर आप मैनुअली चीज़ों को लेके चलेंगे तो वो जैसे फॉर एग्जांपल आई जस्ट गिव यू वन लास्ट एग्जांपल के होम शेफ्स जैसे हैं फूड पांडा पे, समटाइम्स वी आल्सो डिड इट। तो एक बड़ा चैलेंज ये है कि आपको वेंडर से सप्लाईज भी लेकर आनी है, पैकिंग मटेरियल है, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपने लेकर आनी है। सो नॉर्मली क्या होता है कि लोग जाते हैं होलसेल मार्केट में, वो और मतलब गाड़ी पे जाएंगे, बाइक पे जाएंगे, ऑटो पे जाएंगे, खुद जाएंगे और फ्यूल बर्न करेंगे। ठीक है, सो रेदर Thank यू you. कैन। Numan, actually time is जी, so much limited. I want to close it. श्योर तो अगर श्योर, आप ओके, थैंक यू सो मच। वो क्लोज करें तो फिर मैं इसको ना इस सारी इतनी साइंटिफिक और इतनी नॉलेजेबल किस्म के डिस्कशन को ना बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दूं और मैं ये बता दूं कि भाई ये चीजें देखने में बहुत मुश्किल नजर आ रही और लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ है जो कि शायद हमसे नहीं होगा या हम जो है ये शायद नहीं कर सकते।